Good afternoon, everyone. I'm Mohammad Hamas, Chief Coordinator, TNV IIUI Chapter, and on behalf of the New Visionaries International Islamic University Chapter, I welcome you all to the most awaited part of the UGRAD series and very first webinar of the New Visionaries International Islamic University Chapter. In today's webinar, we will be discussing the most important part of the UGRAD application, and that is the statement of purpose. But before moving further, please allow me to introduce TNV IIUI Chapter. The New Visionaries International Islamic University Chapter is a dynamic youth-led sub-organ of the TNV Youth Forum, dedicated to empowering and fostering the growth of young individuals. We are focused on serving social sciences students with the mission to provide them a vibrant platform to unlock their full potential, engage with like minded peers, and make a meaningful impact on their communities. Our core objective is to cultivate essential interpersonal skills, leadership, and organizational skills that are pivotal for the personal and professional advancement. Moving forward, I bring you today's esteemed speaker, Mr. Atif Siddique. Mr. Atif Siddique, welcome and thank you on behalf of TNV IIUI chapter for speaking on behalf and for representing and for informing the youth what are the essentials of the SOP. Mr. Pleasure is all Atif Siddique, mine. thank you, Mr. Atif. Mr. Atif Siddique is an alumnus of the Global Undergraduate Program for Spring 23. He has a notable experience at the University of Toledo as part of the Global Undergraduate Program. His insights and expertise in this area are truly commendable. Mr. Atif has also served as the president of the Moot Court Society, International Islamic University Islamabad, in the recent years. He is a recent law graduate and currently working with Mr. Ahmad Bilal Sufi as research associate. Mr. I would like to thank you, extend my gratitude on behalf of the New Visionaries IIUI chapter to Mr. Atif Siddique. Pleasure is all mine, and thank you inviting for me on this platform and for enlightening aspirants on such a for and inspiring them for a kind of scholarship which is really a prestigious one because you are representing your country as a culture ambassador. So thank you actually. So, Mr. Atif, let's begin the webinar now. We will be delving into the said title with a variety of questions. So, without further ado, let's proceed with the first question. So, Mr. Atif, the first question is, we want to clear up some general terms and things before moving forward. So, what is basically the statement of purpose? Hamas, before I guess we should move on to the statement of purpose, I want to elaborate the objectives of the very scholarship and what that scholarship actually is. Because you have to mold your statement of purpose in accordance with the objectives. That's the smartest way you can maximize your chance of getting selected. Because when you know what are the objectives and you're molding your statement of purpose in accordance with that, then it will maximize your chance of getting selected. So, starting with the objectives and what the very program is, I will try to speak from wholeheartedly, from my heart, instead of indulging myself into English idioms and the way normally sessions goes. It's like they are more indulged in complex things rather than explaining it simple because I believe there is simple answers to a lot of questions. It's human nature that they used to make things complex more than the thing actually are. So, and there was a poetic verse by Iqbal, I guess, कि बात जो दिल से निकली असर रखती है. तो उसके साथ स्टिक होते हुए I will try to elaborate. Firstly, ये समझने के लिए कि ये स्कॉलरशिप कैसे हमने हंट करनी है एंड अपने चांसेस मैक्सिमाइज करने हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि ये स्कॉलरशिप प्राइमरीली है क्या. So firstly, primarily it is sponsored by Department of State, to be more specific, Bureau of Education and Cultural Affairs,
and it was started. The Bureau of Education and Cultural Affairs was started in 1961 as per the mandate of the Mutual Education and Culture Exchange Act. That was the legal parent act, Education and Culture Exchange Act, Mutual Education and Culture Exchange Act. सो ये इस एक्ट की बुनियाद पे ये पेरेंट एक्ट है जिस पे ये बॉडी बनी थी यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड देन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आई एम राइट नाउ ऑन द वेबसाइट ऑफ ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स, and it says that we works to build friendly peaceful relations between the people of United States and the people of other countries through academic, cultural, sports and professional exchange programs as well as public private partnerships. So these are the objectives कि हमने कल्चर एक्सचेंज करना है, हमने दूसरों के कल्चर को समझना है, अपना कल्चर डिसेमिनेट करना है. एंड अगेन इसको कनेक्ट अगर आप करें यूनाइटेड नेशन के साथ, इफ यू आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, यूनाइटेड नेशंस के पर्पस के साथ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम रह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्डर है, ये जो लीग ऑफ नेशन के ऑर्डर, बिकॉज दैट ऑर्डर फेल्ड बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी. तो उसके बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना यूनाइटेड नेशन का, उसमें अमेरिका नो डाउट हैज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल, राइट. तो और the very first line of UN Charter says that the preamble of United Nations Charter says that we have to save succeeding generations from the scourge of war which we have twice experienced in our lives. So अब इसमें एक कुछ one of the reason के nation fight करती हैं, not the only reason, one of the reason is because they have differences होंगे तो लड़ाई होगी, otherwise नहीं होगी. if we are on common page we will not fight, right? So पर्टिकुलरली कल्चर डिफरेंसेस होते हैं. अब वो डिफरेंसेस अगर खत्म हो जाए तो समहाउ वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है और मिनिमाइज किए जा सकते हैं कैजुअलिटीज. सो फॉर दैट पर्पस अगर आप उसको यूनाइटेड स्टेट के ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स के साथ कनेक्ट करें तो इट इज एक्चुअली ए मूव टू प्रिवेंट वॉर एंड टू मेंटेन ग्लोबल पीस. सो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख लें. अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको समझ आएंगे, देन आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी एप्लीकेशन को क्राफ्ट करेंगे. नाउ अब ये इसका आगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, तो स्पॉन्सर्ड एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स. देन उसका जो सब्सिडरी इदारा है वो ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स है. अब पाकिस्तान में ये आई गेस 2010 में शुरू हुई थी स्कॉलरशिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी जस्ट कंफर्म इट. Yes, in 2010. तो पाकिस्तान में जो स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कर रहा है, पाकिस्तान में जो इदारा इसको डील करता है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान. और इस तरह की ये यूनाइटेड स्टेट्स की एजुकेशन फाउंडेशन मल्टीपल कंट्रीज में हैं जो इसी तरह की प्रोग्राम रन करती हैं. और अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो दिस इज नॉट द ओनली प्रोग्राम, फुलब्राइट एंड देयर आर मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव. और जो यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रेगुलेट करते हैं वो इंटरनेशनल रिसर्च एक्सचेंज बोर्ड है, इंस्टीट्यूशन है. वो जो लोग UGRAD के लिए सिलेक्ट होंगे वो वहां पे जाएंगे, देन आगे सारा कुछ जो भी उनके साथ डीलिंग्स होंगी वो IREX वाले करेंगे, इंटरनेशनल रिसर्च एक्सचेंज बोर्ड. सो नाउ ये कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक तो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स को हमने प्रमोट करना है ताकि हम कल्चर एक्सचेंज करें और टू मेंटेन ग्लोबल पीस. So this is one of the thing. उसके बाद now moving toward a bit about its application process, eligibility criteria is that you need to be Pakistani citizen if you are applying within the deadline of USCFP. Then you need to be 25 years or younger and currently आप enrolled हो and first or last year में ना हो, in between आप apply कर सकते हैं. And उसके बाद इन एलिजिबिलिटीज की है कि डुअल सिटीजन ना हो, एम्प्लॉयर्स ना हो फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशंस की या US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की या इस तरह की और जो US बॉडीज हैं. एंड देन अगेन जो स्टूडेंट फर्स्ट एंड फाइनल ईयर में है, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्रूशियल पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. Do you have any other specific question before that or should I move towards SOP? You may move towards SOP. And thank you very much for clarifying the basics of the program. Thank you.
नाउ जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इट इज वेरी क्रूशियल पार्ट, नो डाउट। ये आपके चांसेस को मैक्सिमाइज करती है अगर ये अच्छी आपने लिखी हो, बट देयर इज ए मिसकंसेप्शन कि जस्ट एसओपी मैटर्स, ऐसा नहीं है। होल एप्लीकेशंस मैटर एंड एसओपी का एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर होता है, बट it is entire application which makes your chances maximum for getting selected for the very particular scholarship. So SOP में अगेन कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, इट्स ए काइंड ऑफ सब्जेक्टिव थिंग। आप मुख्तलिफ लोगों की स्टोरी सुनेंगे, मैंने ये एसओपी लिखी है, आई गॉट सिलेक्टेड, राइट। एक मेरी स्टोरी है, एक मेरा थॉट प्रोसेस है, हर बंदे का अपना एक थॉट प्रोसेस है। एक मेरा थॉट प्रोसेस है जो मैंने यूज किया है, आई गॉट सिलेक्टेड। इसी तरह हर बंदे का अपना है। देयर इज नो वन फिट ऑल साइज काइंड ऑफ फॉर्मूला कि एक आपको ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक है, नो, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक। अच्छा, मूवी इसके साथ साथ जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताए, कुछ चीजें मैं और बताता चलूं ताकि एसओपी समझाने में मुझे आसानी हो। नाउ जब आप वहां पे जाते हैं, देन द बॉडी डीलिंग, द इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद यू विल बी इंटरनेशनल रिसर्च एक्सचेंज बोर्ड। कुछ एक्टिविटीज वो आपसे अरेंज करवाते हैं। ये मैंने अपनी वर्कबुक जो पर्टिकुलरली उन्होंने प्रोवाइड की थी हमें कि आपने यही एक्टिविटीज करनी है, ये एग्जैक्टली वो मैंने अपने सामने खोली हुई है। And there are 6 areas of US culture जिसमें आप काम करते हैं। Again, you are a culture ambassador, you are a peace ambassador in one of the dimension. Now, ये 6 areas में आपने काम करना है to get a digital culture passport of America. वो आपको एक digital culture passport देते हैं। पहला आर्ट्स एंड म्यूजिक है, इसमें आप म्यूजियम में विजिट करते हैं या दैट काइंड ऑफ थिंग। देन हॉलीडेज एंड डाइवर्सिटी सेलिब्रेशंस हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हॉलीडेज, जो लोकल हॉलीडेज होती हैं या नेशनल हॉलीडेज होती हैं, फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर किंग डे है और इस तरह की और बहुत सी हॉलीडेज होती हैं, इनमें पार्टिसिपेशन आपकी। देन स्पोर्ट्स एंड लेजर, नॉर्मली वहाँ पे मैंने बास्केटबॉल की काफी गेम्स में पार्टिसिपेट इन अ सेंस कि गया था, विजिट किया था मैंने, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट बास्केटबॉल एक्चुअली। तो ये स्पोर्ट्स एंड लेजर का एक पार्ट है। देन कम्युनिटी लीडरशिप इन एक्शन, इसमें आपने वहाँ की जो स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या आई मेट विद मेयर ऑफ टोलेडो, देन प्रेसिडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, and then I wrote email to Attorney General of Ohio because I was placed in state of Ohio. तो ये आपने कोई भी लीडरशिप वहाँ पे, शेरिफ से आप मिल सकते हैं, आई मेट शेरिफ टू। तो ये कुछ इस रैलम में जो फॉल करती हैं इस पर्टिकुलर सबसेट की डायमेंशन की एम्बिट में। देन लोकल प्राइड, वहाँ के कोई लोकल फंक्शंस वगैरह होते हैं, वहाँ की कोई लोकल सेलिब्रेशंस होती हैं, उसमें आपने उनका जो लोकल हेरिटेज है, जो लोकल कल्चर है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज ए बिग फेडरेशन, राइट। उसके अंदर 50 स्टेट्स हैं, राइट। एंड देन हर स्टेट का अपना एक सब्जेक्टिव कल्चर भी होगा। ये हम आगे बात करेंगे जब वहाँ पे एडजस्टमेंट के, आप जब जाएंगे वहाँ पे कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें बड़ा इजीली हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं अमेरिकन, बिकॉज दे आर इन ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन दैट स्टेट्स के जहाँ पे कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। सो देयर इज सब्जेक्टिव कल्चर, और लोगों के जो अपने इंडिविजुअल रवैये हैं उन पे वो सोसाइटी के कल्चर की डोमिनेशन आपको नजर आएगी। देन यूथ कंसर्न्स, अगेन इसमें आपने लीडरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये कुछ 6 एरियाज हैं। तो अब आप, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, इफ यू आर द वन हु इज गोइंग टू सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर द वेरी स्कॉलरशिप, और आपको फंडिंग, यूएससीएफपी को फंडिंग कौन दे रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अब मुझे कोई फंडिंग दे रहा है और मैंने आगे कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करने फॉर द वेरी स्कॉलरशिप, मेरी फंडिंग रिलाई करती है उन स्टूडेंट्स पे कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल है। जितनी कल्चर हार्मनी, जितना ज्यादा हम वी आर फोस्टरिंग कल्चर हार्मनी, तो जितना ज्यादा हम फोस्टर कर रहे होंगे कल्चर हार्मनी को, उतना ज्यादा प्रोग्राम सक्सेसफुल है और उतनी ज्यादा ग्रांटेड फंडिंग है। दैट्स हाउ नॉर्मली कमर्शियल थिंग्स गोज ऑन, राइट। सो अगर मुझे कोई कहे तो मेरे ज़हन में ये समहाउ ये पॉइंट्स तो होंगे कि यार इसने जाके अपनी एकेडमिक्स पे भी काम करना है, बिकॉज अगेन आपको एक सेमेस्टर भी वहाँ पे पढ़ना होता है और उसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स यू हैव टू पिक रिलेटेड टू योर मेजर। One related to American studies, I took American national government at my time. One related to academic skills, I took public presentation, and 2 related to your major. Mine was law, so I took criminal justice system and taught law. So minimum 12 credit hours आप पे कर सकते हैं, maximum 18 credit hours. So that's how, ये वो चीजें हैं जो आपने करनी है। तो अब अगर मैं देखना चाहता हूँ
एक कैंडिडेट में कुछ, तो मैं ये सारी चीजें देखना चाहता हूँ कि ही शुड बी मल्टीटास्कर, ही विल बी डूइंग हिज लॉट ऑफ अदर स्टफ देन एकेडमिक, राइट? तो वो अपनी एकेडमिक्स को भी साथ लेके जो चल सकता हो, देन ये 6 डिफरेंट एरियाज में काम कर सकता हो, देन एडिशनली एक कंट्री प्रेजेंटेशन आपने देनी होती है, राइट? Because again you are representing your culture, you are trying to create culture harmony between two countries, so culture understanding आपने enhance करनी है वहां जाके। so ये सारी चीजें कैंडिडेट में, अगर एक कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन में ये चीजें दिखा सकता है, पोर्ट्रे कर सकता है कि आई एम मल्टीटास्कर, आई हैव गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, along with that I have done a lot of co-curricular and extracurricular activities, and I'm also keen to learn other cultures। अब ये सारी चीजें जो demonstrate कर दिया अपनी application में, that he can be the optimum as per the thought process of the one who is going to interview you, right? अगर आप एक logical pathway देखें तो वो यही बनता है। Again कोई objective criteria नहीं है, ये मेरी understanding है, what I understood from after attending the whole program, right? So ये वो चीजें इस context में, now we are coming towards statement of purpose। ये समझ आ गई आपको? now अब ये सारी चीजें कैसे डिमॉन्स्ट्रेट होती हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में? मैं एक तो पहले मेजर आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा कि व्हाट आई थिंक कैन बी ऑप्टिमम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और मैंने कैसे क्राफ्ट की थी। मैं अपना थॉट प्रोसेस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप, बिकॉज अक्सर ये भी इशू होता है कि आप एस्पायरेंट्स को ये तो बता देते हैं कि these points should be included in your statement of purpose, right? बट अगेन उनको ये समझ नहीं आता कि अब इन पॉइंट्स को हम ऐड कैसे करें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। सो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि उसको क्राफ्ट कैसे करना है, वो जब तक उनको एक क्राफ्टेड आप बताएंगे नहीं, कनेक्ट करके उन पॉइंट्स के साथ कि ये पॉइंट्स थे और ऐसे मैंने कनेक्ट किया था, सो दे कैन कनेक्ट from their perspective with those key points। So I will try to connect those points with my statement of purpose so that you can easily craft your statement of purpose as per your facts and background। Now कुछ key points what I think is important। बैकग्राउंड आपने स्लाइड से देना है, अगेन 250 वर्ड्स है, कोई बहुत लंबी कहानी आपने नहीं लिखनी। 250 वर्ड्स आर वेरी, यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली विद वर्ड्स। बैकग्राउंड आपने स्लाइटली से मेंशन करना है, जो आपका मेजर है वो मेजर आपने क्यों पिक किया, फिर मेजर आपने जो पिक किया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एजुकेशन, इसकी एक वजह है कि मेजर की कॉस्ट क्यों देनी है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एजुकेशन, फिर आपकी क्या पार्टिसिपेशंस थी और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, देन आपके फ्यूचर एम्स क्या हैं। नाउ दोज एम्स विल बी कनेक्टेड विद द कॉज कि आपने मेजर को चूज किया। आपने मेजर चूज करने की कॉज कुछ और बताई और एम्स आपके कुछ और हैं, तो ये एक फैल्सी क्रिएट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि कॉज ये थी इस वजह से ये मेजर मैंने चूज किया, बट मेरे एम्स ये हैं। नहीं, एम्स शुड बी एज पर दोज कॉज। बीच में चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन देन यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट गैप इन दैट कोहेरेंसी कि इस वजह से मेरे फिर जब मैं एक दफा आ गया इस मेजर में, दैट वाज द रीजन कि मेरे एम्स थोड़ा सा they are in conflict with the cause। then एम्स के बाद UGRAD एक्सपोजर, कैसे आपके जो पर्सनल एम्स हैं या आपके और जो आपके सोसाइटल रिफॉर्म के लिए एम्स हैं, कैसे UGRAD का एक्सपोजर जो है, UGRAD एक्सपोजर आपको उनको कॉम्प्लीमेंट करने में और आपको हेल्प आउट करने में एक की रोल प्ले करेगा, और कैसे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और एम्स को फुलफिल कर सकते हैं ये प्रोग्राम अटेंड करके एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यूनाइटेड स्टेट्स के कल्चर का लेकर, और आप कैसे अपने सोसाइटल जो रिफॉर्म के आपके एम्स हैं उनको कैसे अचीव करने में ये एक बूस्टिंग फैक्टर साबित होगा। देन कैसे ये होलसम लर्निंग आपको एक ऐसे बंदे में कन्वर्ट करेगी दैट यू विल बी a best and useful resource for whole humanity, right? ये कुछ चीजें हैं जो आपने अपनी SOP में करनी है। नाउ मैं अपना बता दूं, मेरी द वेरी फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी थी, इट वाज कि hailing from financially unstable family, I chased my dream of pursuing education by doing jobs in call centers and multiple venues। अब ये मेरा स्लाइड सा बैकग्राउंड, वो कुछ लोग लिखना शुरू कर देते हैं माउंटेनियस रेंज एंड लश ग्रासलैंड्स और इस तरह की वो ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं अपने नेटिव एरिया को। आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रही, you are not going on an English teaching program या फिर कोई लिंग्विस्टिक के प्रोग्राम पे आप नहीं जा रहे, लैंग्वेज एपिस्टेमोलॉजी समझने आप नहीं जा रहे, कल्चरल प्रोग्राम है,
As far as आपका मीनिंग कन्वे हो रहा है, सिंपल इंग्लिश इज इनफ. यू डोंट नीड टू क्राफ्ट इन अ वे दैट कोई बहुत ही complex idioms and compound complex sentences आप उसमें लिखें. So ये स्लाइड सा बैकग्राउंड था. तो मैंने कहा ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ माय लाइफ आई रियलाइज्ड द कोर प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी. अब ये फर्स्ट मेरा मेजर प्रेमिसेस, पहली लाइन है मेरा माइनर प्रेमिसेस है कि मैंने दैट ड्यूरिंग दैट कोर्स मैंने अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की. And law having its roots in almost every aspect of life is perhaps the best tool to reform our society. अब ये कंक्लूजन है. मेरा मेजर प्रेमिसेस क्या था, मेरा माइनर प्रेमिसेस कि मेरा मेजर प्रेमिसेस मेरा बैकग्राउंड क्या है जिसकी वजह से मैंने आइडेंटिफाई किए सोसाइटी में इशू, और उन इशू का सोल्यूशन मुझे लॉ में नजर आया. एंड दैट्स हाउ आई एंड अप इन लॉ डिग्री. दैट्स द कंक्लूजन फ्रॉम अपर टू प्रेमिसेस. तो इस तरह एक सोलिजिसिज्म बन गया. मेरा पहला सेंटेंस दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है. तो एक कोहेरेंसी बन रही है. नाउ ये हो गया. अब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ माय एजुकेशन आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस, इंटरनेशनल मूड कोर्ट्स, नेशनल मूड कोर्ट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैंने ये 2 लाइनों में ये लिख दिया. अब यहाँ पे भी कुछ लोग 250 वर्ड्स हैं. अगेन यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली विद वर्ड्स. अब यहाँ पे भी अक्सर लोग ये करते हैं कि वो ये मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था उसकी डिटेल्स लिखना शुरू कर देते हैं. नो, यू डोंट हैव मच वर्ड्स. और देन ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं एक्टिविटीज वाले पोर्शन में. आपकी एप्लीकेशन में एक एक्टिविटीज वाला पोर्शन है जहां पे अपनी अपनी एक्टिविटीज लिस्ट करनी होती है जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया. तो रादर कि आप इस पोर्शन में ये सारी चीजें मेंशन करें. आप एक्टिविटीज में आपके पास वहां पे यू गॉट इनफ स्पेस देयर, वहां पे आप अपनी डिटेल मेंशन कर दें. यहाँ पे सिर्फ हल्का सा पॉइंट आउट कर दें कि मैंने ये काम किया हुआ है. और इसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपकी आ जाएगी सर्टिफिकेशन के पोर्शन में, और एक्टिविटीज की डिटेल एक्टिविटीज के एप्लीकेशन के पोर्शन में आ जाएगी. यहाँ पे आपने पॉइंट करना है. यहाँ पे आप वो लिखें कि जो आप बाकी एप्लीकेशन में नहीं लिख सकते, कि कैसे ये एक्सपोजर यूनिक है मेरे लिए, कैसे ये मेरे एम्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल मुझे साबित होगा. तो ये चीजें आप यहाँ पे मेंशन करें. तो ये एक लाइन मैंने लिखी थी, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन के पोर्शन में मैंने उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया था. सिमिलरली जो मेरी फर्स्ट 2 लाइंस थी उनका भी मैंने जो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था उसके भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिए थे. एंड देन मेरा ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच थी, और इसके साथ मैंने लिखा था कि आई हैव मेंटेन्ड वेरी गुड जीपीए. मेरा जीपीए इट वाज 3.9 समथिंग था. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका मैंने दे दिया. अब साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहा हूँ, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अटैच. और एक्टिविटीज वाले पोर्शन में जितनी भी एक्टिविटीज जो लॉ स्टूडेंट काउंसिल में मैं था उस टाइम वो जो करवा रहे थे, और बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मैंने अटैच कर दी. तो इस तरह मेरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को मेरा डॉक्यूमेंटेशन वाला पोर्शन और एक्टिविटीज वाला पोर्शन जो है वो जस्टिफाई कर रहा है, वो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा है, वो एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई और चेक कर रहे हैं. तो इस तरह आपने एक पूरी एप्लीकेशन में एक कोहेरेंसी बनानी होती है. ये हो गया. उसके बाद मैंने अपने एम्स देखे कि आई एम टू पुट ऑल माय एफर्ट्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ लॉज इन पाकिस्तान सिंस आवर लॉज वर मेड इन 18th सेंचुरी. तो ये मैंने एक अपने एम्स देखे. और फिर UGRAD एक्सपोजर पे मैं आया कि सिंस यूनाइटेड स्टेट्स हैव अपडेटेड लॉज, राइट, so first hand experience of those laws will equip me with the tool that I'll be able to modify our laws in more better way. वर्ड्स डिफरेंट होंगे बट थीम यही था. एंड देन उसके बाद ये तो अब मेरे गोल हो गए जो सोसाइटी रिफॉर्म से रेलेवेंट थे. अब इसके साथ मैंने अपना ये भी लिख दिया कि furthermore UGRAD exposure जो है it will enhance my belief on coexistence and will convert me into a person. ये इस तरह का मैंने कुछ लिखा था. कल्चरल एक्सचेंज के हवाले से भी कुछ लिखा था. एग्जैक्टली मुझे वर्ड्स याद नहीं. एंड लास्ट में फिर मैंने लिख दिया था कि दिस होलसम लर्निंग विल convert me into a person that I'll be in a better position to serve my nation and humanity in the best possible way. तो इस तरह मैंने एक इंसानियत का भी टच दे दिया, because ultimately यूनाइटेड नेशन चार्टर का मकसद ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स जो फ्रेमवर्क है वो भी एक थोड़ा सा लिंक कर दिया मैंने इसके साथ. तो ये इस तरह आपकी पहली चीज, दूसरी चीज जैसे अब मैंने कॉज बताया था कि मैंने इश्यूज देखे और उसका हल मुझे लॉ में मिला, और फिर मैंने आगे लॉ को कनेक्ट किया कि मैं लॉ की मॉडिफिकेशंस पे काम करना चाहता हूं. तो आगे वो जो मैंने कॉज देखा था, तो मेरा कॉज इफेक्ट सारी फर्स्ट सेंटेंस दूसरे के लिए, दूसरा पहले के लिए एक सपोर्टिव किरदार अदा कर रहा है.
तो इस तरह आप एक होलसम एसओपी लिखते हैं जिसमें आप एक कोहेरिजन के साथ लिखते हैं, जिसमें कोई गैप्स नहीं होते. Very insightful, Mr. Atif. That was very brilliant that you covered all the major factors of the SOP in a very brief manner, and I have to say, in a very insightful manner. Uh, Now, moving further, you mentioned six factors: music and other five. How to utilize those five factors in the SOP? You're talking about music and all that, right? It was not exactly the music, it was like arts and music. So yeah, it's not like I'm promoting कि आप लोग सिर्फ music पे जाएं. I personally visited a museum, uh, numerous museum actually. So it's arts and music. तो उसमें आप concert पे जा सकते हैं, then आप museum में जा सकते हैं. You can visit any place which has that cultural heritage and kind of thing. So इनको Okay, what was your question कि पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं कि in United तो States? मेरा सवाल ये था, अगर ये फैक्टर्स वहाँ इम्पोर्टेंट हैं तो हम अगर इन्हीं एक्टिविटीज को लेकर अपने एसओपी में इनकॉर्पोरेट कर दें. Yes, then exactly. Now, like again मैं अपना बताऊँ, I was a student foreign secretary of Law Student Council at that time, and I was in transitional phase to get promoted to vice president of Law Student Council. So वो आपकी leadership वाला पोर्शन कवर कर दिया. आपकी एक दो सर्टिफिकेशन अगर टैक्स एप्लीकेशन में, not again SOP में आप वो सारी डिटेल्स नहीं लिखेंगे. SOP में सिर्फ आप लिखेंगे I represented my university in various moot courts, this, so on and so forth, and I have also honored to hold office of vice president of Law Student Council, and जो भी आपने designation आपकी थी वो आप mention कर देंगे within 1-2 line because we don't have much words again. So you have to keep that word limit in mind at every point of SOP. So आपकी लीडरशिप वहां से होगी. देन एक्टिविटीज में जब आप मेंशन करें, कोई एक्टिविटीज का जो पोर्शन है उसमें आपने मेंशन कर दिया कि ये मैंने ये कोई कल्चर से रिलेटेड आपका जो भी एक्टिविटी थी वो आपने मेंशन कर दी, वो हाईलाइट हो गया. सो लाइकवाइज कम्युनिटी इन लीडरशिप, आपने कोविड वेव के दौरान कम्युनिटी सर्विस दी है, आपने वो उसमें ऐड कर दी. तो दैट्स हाउ आप ऐड चीजें एक्टिविटी वाले पोर्शन में इस तरह की सारी करेंगे, तो दैट विल रिफ्लेक्ट. ये आपने दावे नहीं करने. मैंने अक्सर एसओपीज मेरे पास जो आती रहती हैं फॉर रीचेकिंग, तो उसमें अक्सर उन्होंने दावे किए होते हैं. नो, डायरेक्ट दावा ना करें. आप अपनी एसओपी ऐसे क्राफ्ट करें वो रिफ्लेक्ट करें. लाइक मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि मैंने ये किया, मैंने कहीं नहीं लिखा मैं हार्ड वर्क करूँ, मैं मल्टीटास्क करूँ, बट उसमें मेरे अटैच्ड है डीएमसी कि मेरा जीपीए ठीक है. देन मेरी एक्टिविटीज के पोर्शन में 3 एक्टिविटीज लिखी हुई हैं. देन जॉब्स के सर्टिफिकेट्स अटैच हैं. तो ये बता रहा था कि एक बंदा एट अ टाइम एकेडमिक्स को लेके चल रहा है और एक अच्छा जीपीए लेके चल रहा है, एक्टिविटीज भी कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर जॉब भी कर रहा है, तो ही इज अ मल्टीटास्कर. सो आपके दावे से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी एसओपी और जो फैक्ट्स आपने लिखा वो विल ड्यूरेंट की बुक में एक कोटेशन थी कि वी सस्पेक्ट लॉजिक बिकॉज वी हैव लर्न दैट रीजन इज ए डिजायर ड्रेस्ड इन ए रैशनैलिटी. सो डिजायर को काटे आप फैक्ट्स को. यू हैव, आपके पास जो फैक्ट्स हैं आपकी लाइफ की, यू हैव टू ड्रेस्ड इन ए रैशनल वे, ड्रेस इन ए रैशनैलिटी, सो दैट इट शुड बिकम कोहेरेंट एंड it will maximize your chances for getting selected for the very scholarship, right? So इस तरह आप ये आप अगेन आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स हैं, आपने उनको कैसे यूज करना है, उसको कैसे पोर्ट्रे करना है आपने, ये आप अपनी हर बंदा अपनी कंडीशंस को देखता है. बट एक्टिविटीज वाले पोर्शन में सर्टिफिकेट्स में डाल दिए, एसओपी में ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं लिखी जाती. तो दैट्स हाउ पूरी एप्लीकेशन से आपके वो मैनिफेस्ट होनी चाहिए ये चीजें. तो इस तरह आप इनको मेंशन कर सकते हैं. Very insightful once again, Mr. Atif. So you have mentioned a lot of things, and that's an ideal case that if we are having leadership positions, certifications, activities. But what if someone lacks, or he or him has some weakness in their application in either the academic portion and the extracurricular portion? How to address that gap? Now, this is again a very frequently asked question, और ये मुझसे भी बहुत लोगों ने किया है. The thing is कि okay, you don't have that much strong application because the criteria I am telling you, it's very high criteria. I can feel that.
It is a kind of thing you are hitting from every dimension, as per my understanding. You're hitting from every dimension. You're nailing it. But the thing is कि हर बंदे के पास इतनी diverse background नहीं होता. Again, it's about the circumstances. आपके society में पैदा होने. What was your subjective circumstances? And it happens. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये मेरे पास के सारा कुछ नहीं है तो demotivate होने वाली बात नहीं है. So एटलीस्ट आई विल रिकमेंड कि आप अप्लाई सारे के सारे करें, जो जितना अवेलेबल है उसमें जितना बेस्ट आप दे सकते हैं वो दें. कई लोगों का जीपी अच्छा नहीं था, दे गॉट सिलेक्टेड. इतना डाइवर्स चीजें लोगों के पास नहीं थी. सो इट्स नॉट लाइक ये सारे क्राइटेरिया आपको मीट करने. दो देयर इज नो शूज के जिसमें आप यू हैव टू स्टेप इनटू दैट. नो देयर इज नो पर्टिकुलर साइज, वन फिट ऑल साइज काइंड ऑफ थिंग. बल्कि आपकी कोई एक दो तीन एक्टिविटीज भी होंगी जो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करे कि आप ये सारे काम करने की अहलियत रखते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये सारे काम किए ही हों इधर, बल्कि ये द मोमेंट दे रियलाइज कि ये सारे काम कर सकते थे, ही हैव द पोटेंशियल, यू हैव टू शो दैट पोटेंशियल. सो इफ यू आर वीक इन सम पार्ट, डोंट वरी, जस्ट गो फॉर इट. एंड अगेन अगर नहीं होता तो अप्लाई फॉर अगेन नेक्स्ट टाइम, और अगर हो जाता है तो लेमन फ्रॉम लेमनेड. So again, it's kind of win-win situation. अब अगर आपके थोड़ा सा वीक है, आप अप्लाई ना करें, फिर तो होगा ही नहीं ना, फिर तो आपका इंटरव्यू भी नहीं होना. आपने अप्लाई किया, नहीं हुआ, एटलीस्ट यू गिव इट ट्राई. आपने कुछ ना कुछ एक्सपोजर तो लिया होगा एप्लीकेशन देने से या इंटरव्यू तक अगर आप पहुंचे, इंटरव्यू देके, एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन इम्प्रूव दैट. सो अप्लाई एटलीस्ट करना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू गिव ए शॉट. इट्स वर्थ ए शॉट. आप अपनी तरफ से ट्राई तो करें, नहीं होता दैट्स अनदर एस्पेक्ट. Very insightful. Thank you, Mr. Atif. But as it is said, to err is human, and I want to ask that what are the major things we should avoid while applying for UGRAD? That's kind of tricky question. I mean, I can tell what to do. जो मैंने बताया कि यही आपने करना है, इसके अलावा बाकी चीजें अवॉइड कर दें. बट देयर इज नो पर्टिकुलर अगेन थिंग कि जिसको आप, यस, अगेन इट कम्स टू माय माइंड, अपनी एसओपी खुद लिखें, किसी से एसओपी फिल ना करवाएं. Yes. There's a red line of doing some mistake. Yes, let's connect to that. Okay. Firstly, SOP आपने खुद लिखनी है. Don't rely on anybody. Then don't craft it in very kind of don't craft it in a way कि it's more than कि वो आपको शो करे उस SOP में. वो एक linguistic की चीज, एक art of literature लग रहा हो. Because again आपका meaning, because you have to convey the meaning. That's why I अभी मैं भी जब बोल रहा हूँ, I'm using very flexible language. Why? Because the objective is कि जो meaning मेरे mind में है वो मैं convey कर दूँ अगले तक. Language is a tool. तो tool पे ये मैंने देखा है कि tool पे focus ज़्यादा किया जाता है. वो they got stuck in language idioms and then complex terminologies. No, just be very simple in your English. Don't worry about that. Grammatical mistakes इतनी ना होंगे. आपको at least English आती हो. But again, it is just a tool. तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टूल पे फोकस ना करें, ऑब्जेक्टिव पे करें. एक तो ये चीज मैंने देखी है. देन खुद लिखें, किसी से मत लिखवाएं, बिकॉज यू हैव टू डिफाइन इट इन इंटरव्यू. अब मेरी एसओपी में इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस किया, आई हैव टू डिफाइन इट. इंटरव्यू तो आप नहीं गा के देना, राइट? लेट मी टेल यू 2 or 3 थिंग्स. अब ये बात चल पड़ी है तो इंटरव्यू में लाइक उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल मूड कोर्ट्स. आई सेड यस. एंड सो व्हाट काइंड ऑफ मूड कोर्ट इज दिस? फिर मैंने उनको बताया जेसफ इंटरनेशनल लॉ मूड कोर्ट. And my proposition that the question I was dealing with was about regarding the admissibility of illegally obtained documents. And then उन्होंने मुझसे वो पूछ लिया. Now that was my forte, right? अभी मेरा, that was my playground, because they don't know a lot about that thing, about law, about admissibility of illegally obtained documents in International Court of Justice. I have researched on that. That's the point where I educated them.
ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप एजुकेट कर रहे होते हैं इंटरव्यूअर को, इन अ सेंस के यू आर टेलिंग देम न्यू इन्फॉर्मेशन, सो दैट मेक्स इट गुड इम्पैक्ट ऑन देम, राइट। एंड देन उसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे ये आगे इंटरव्यू, डू यू हैव क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू पार्ट? No specific questions for the interview part, Okay, then but you may proceed. Yes. I can connect it, right? Okay. So इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे वहां पे, कैसे न्यू कंडीशंस को अडॉप्ट करेंगे। So मैंने उनको बताया कि I came all the way from my village, then I am living in Islamabad, I am continuing my academic career, उसके साथ I am doing extracurricular activities and I told them my schedule, वही सारी चीजें जो SOP में भी लिखी थी, उनकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, सर्टिफिकेशन के पोर्शन में तो एक्टिविटीज नहीं मेंशन थे। सो मेरी जो इंटरव्यू में बात कर रहा था दैट वाज ए प्रूफ ऑफ ऑल ऑफ माय एप्लीकेशन। अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं फॉर इंटरव्यू, इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन इज इंप्रेसिव। नाउ दे जस्ट वांट टू क्रॉस चेक कि ईदर द पर्सन इज दैट वन कि जिसने वो एप्लीकेशन फिल की है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी है, कि कहीं आप उनको डॉज तो नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि खुद आप लिखें, आई वाज टेलिंग यू कि खुद आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें। तो मैंने कहा वहां से मैं आया, सो मैंने ये कंडीशंस अडॉप्ट की। देन यूनाइटेड स्टेट्स में तो यू आर गिविंग सच ए लग्जरियस लाइफस्टाइल, राइट। आप यू गॉट 5 to 6 एडवाइजर्स, USCFP advisor, International Research Exchange Board advisor, Department of State advisor, host advisor, academic advisor. So your life, my life will be like very easy there, because the way I am living here is more crucial than that, is more kind of hectic. So I will adjust easily. So ये अब मैंने ये नहीं कह दिया कि यस मैं वहां पे एडजस्ट कर लूंगा, ये दावा नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी लाइफ से लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर की, अपनी लाइफ से प्रूव दिया कि यस मैंने ऐसी लाइफ ऑलरेडी जो आप मुझसे चाहते हैं मिनी लेवल पे गुजारी है पाकिस्तान में। और उसकी SOP में भी मेंशन थी वो, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मेरे जॉब्स के सारी चीजें सर्टिफिकेट से वो अटैच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एक्टिविटीज वाले पोर्शन में बाकी एक्टिविटीज मेंशन थी। तो मैं जो इंटरव्यू में बोल रहा हूँ वो सिर्फ दावा नहीं है, दैट्स नॉट ओनली ए डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट, रादर उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अटैच है, वो मेरी SOP को वेरीफाई कर रही है, वो मेरे सर्टिफिकेशन के पोर्शन को वेरीफाई कर रही है, और मेरी एक्टिविटीज के पोर्शन को वेरीफाई कर रही है। देन अनदर लास्ट क्वेश्चन मैं आप बता देता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सिंस ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है तो वहां पे आप कैसे डिफरेंट कल्चर से लोग होंगे, यू नो पीपल फ्रॉम मल्टीपल एथनिसिटीज अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड्स, तो उनके साथ हाउ यू विल कनेक्ट विद देम। तो मैंने उनको बताया, लकीली फॉर्चुनेटली आई वाज स्टूडेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ लॉ स्टूडेंट काउंसिल, सो आई यूज्ड दैट, आई सेड दैट्स हाउ यू यूज द फैक्ट्स यू हैव, यू ड्रेस देम इन अ रैशनैलिटी। मैंने उनको बताया कि मेरे स्टूडेंट फॉरेन सेक्रेटरी लॉ स्टूडेंट काउंसिल का, और यहाँ पे because since administration don't know that much English or other languages, so I am acting as a bridge between administration of our university and those foreign students. Again, हमारी university international थी तो they have a lot of international students, so I act as a bridge from there। वहाँ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। Now we used to go towards Margala Hill and we have blast of fun, we are very good friends of each other, and I used to tell them about my culture and meanwhile learning about their culture। So I told them कि जो आप कल्चरल एक्सचेंज वहां पे मुझे एज अ कल्चर एम्बेसडर देख रहे हैं, मैं वही मिनी लाइफ एट मिनी लेवल पाकिस्तान में गुजार रहा हूँ। आई एम डूइंग दैट कल्चर एक्सचेंज इन पाकिस्तान टू। सो दैट्स हाउ यू टेल देम फ्रॉम योर एंड। उसका फिर सर्टिफिकेशन के पोर्शन में स्टूडेंट फॉरेन सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट अटैच था सर्टिफिकेशन के पोर्शन में, देन उसको मैंने SOP में भी सिर्फ मेंशन किया था कि मैं ये ऑफिस भी होल्ड कर रहा हूँ। सो इस तरह अब मेरी ये स्टेटमेंट जो इंटरव्यू में मैं दे रहा हूँ मेरे SOP को वेरीफाई कर रही है, मेरे बाकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर रही है, और वो एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई कर रही है, राइट। सो इस तरह आप इंटरव्यू में यू प्ले स्मार्टली, आप दावा सिर्फ नहीं करते बल्कि आप उसको अपने लाइफ से प्रूव देते हैं कि ये what you are expecting from me, I am doing that already here। Again, मेरे जो एम्स थे कि मॉडिफिकेशन ऑफ लॉज पे काम करना चाहता हूँ, उन दिनों LSC काफी वेबिनार्स करवा रही थी, अगेन वो एक प्रूफ आ गया। तो इस तरह आप जो है ना हर चीज को कनेक्ट करते हैं। As Mr. Atif said, objective is the key and not the tool.
So now moving further, as you said that you used international diversity to make your chances more for the selection. How can we use a national and local diversity for that purpose? वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ आई टोल्ड यू कि एक जो रिक्वायरमेंट है डिजिटल कल्चर पासपोर्ट की, दैट इज लोकल प्राइड. So that fall under the ambit of local pride. So it is indeed a good point. Yeah, you should participate in that activities too. So you can use them. You can mention them in your activities portion. It will have a good impact on your application. Very insightful, Mr. Atif. So you have almost covered all the aspects, all the factors of the SOP in a very brief manner and in a very insightful manner. And along with that, you have also covered the narrative. But for the general understanding of the participants, I would like to ask you to define what does narrative mean. As you have already defined that, but I would like to specify what does narrative mean for the general understanding of the participants. What does what was the word? What does what mean? A narrative, you said Narrative. that Yeah. Building your narrative. Got it. Uh, let's take it in its very subjective meanings and interpretation. Here, particularly in statement of purpose mean telling them that why you are the best candidate for the very program. That's what your narrative would be. And using all the facts, certificates, activities you have performed before, using all those in such a coherent way that it will maximize your chance for getting selected for UGRAD. That's what narrative building in statement of purpose mean. That's what I am coining, the meaning I am coining. I'm not going into and literal meaning. Yeah. yes, and I would like to mention that Mr. Atif has already briefed that how to build a narrative. I just asked the question just to define what the narrative means for the general understanding of the participants. So moving further, as you have already described the SOP and the narrative, so and you also mentioned your starting lines of the SOP. So, can you tell us how to write an impressive starting line or how to start the SOP in an ideal manner? Now there is no strict rule regarding that. I mean, you can start it the way you want, the way you're crafting your statement of purpose. Again, most of the people use kind of fancy lines and like struggle is life kind of thing. इस तरह की वो use करते हैं phrases at the very beginning. You can use that too, but again the purpose is to convey the meaning, to tell them why you are the best candidate. So it depends on you, but if you don't have much space and if you want to play very smartly with words, so instead of using that technical phrases and kind of thing, आप जो है वो सिंपली अपने बैकग्राउंड से शुरू कर सकते हैं कि ये एंड इन वेरी ब्रीफ. अगेन उसमें आपको ज्यादा डिटेल्स में आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये एप्लीकेशन के एक क्वेश्चन में आपने लिख दिया. यू डोंट नीड टू मेंशन कि आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट this and we have mountains and so on and so forth. I have seen this thing in a lot of SOPs. You don't need to mention that. That is the now there are two type of descriptions, objective and subjective. Objective description आपकी एप्लीकेशन में आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपकी एज क्या है, ये सारी मेंशन है. सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन क्या होगी? अच्छा, आप किस एरिया से, हेलिंग फ्रॉम इग्नोर्ड एरिया, लाइक गवर्नमेंट ने जिसको एरिया को इग्नोर किया होगा. The other word used is backward. I don't use that word most of the time because I believe कि एरिया बैकवर्ड नहीं होता. जब किसी भी एरिया पे प्रॉपरली फंडिंग प्रोवाइड की जाए तो वो फ्लरिश करता है. सो इट्स काइंड ऑफ इग्नोर एरिया. सो आप इस तरह कोई भी फर्स्ट लाइन, ये आपकी सब्जेक्टिव, जो अब एसओपी में जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, जो सब्जेक्टिव चीज है. सो इस तरह आप कोई ऐसी, या फिर आप अगर आप अपनी फैमिली टाइप डाल सकते हैं
जिसका इम्पैक्ट फिर आपके एसओपी में, जिसकी वजह से जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे है, या क्योंकि ये आपका बैकग्राउंड डिफाइन करता है आपकी बहुत सी चीजें, आपका बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ की बहुत सी चीजों को डिफाइन करते हैं एज पर बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजी। सो इसलिए आप स्लाइड से सब्जेक्टिव बैकग्राउंड से शुरू करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड नेचर एंड ऑल दैट। सो दैट्स व्हाट आई recommend. Again, it's my recommendation. That's what I think is the best way. That's very great. And now, as we have heard your story, your success story, we would like to hear out from you some other success stories you have learned and came across while you were at UGRAD progress. Now that's a very, I can answer the question for hours. So it was very good exposure, and there were different stories. I can narrate all of them, but the people from different backgrounds, from multiple ethnicities, diverse backgrounds, from different tribes, from different, and then when you will be in United States, it's a melting pot. You will connect with people from uh, different nations, from different countries across the globe. You will have I have a lot of friends from different countries, a lot of American friends too, and I was lucky enough that I got a lot of friends in United States, and I'm still in connection with them. I used to talk to them. We used to have video call. So because again, the thing I was telling before, कि आप किस area में, that depends on your connections too. Because if you are in Ohio or Michigan, that kind of states, तो उनमें peoples are more friendly because the culture there is different. So that subjective culture of that area, that state, has impact on nature of individuals in that state. और and जो लोग बॉस्टन में थे एंड इस तरह की, लाइक न्यूयॉर्क, जो ज़्यादा बिजी सिटीज हैं, बिग सिटीज, वहाँ पे थोड़ा सा लाइफ इज फास्ट एंड पीपल आर दे वांट देयर स्पेस, एंड दैट्स, वहाँ पे आपको कनेक्ट करने में थोड़ी सी इशू आ सकते हैं. तो it again depends. So there are a lot of stories. I cannot narrate them like this because we don't have much time, I guess. So we can move towards the question from participants. That would be, I guess, a more good option कि उनके ज़हनों में जो क्वेश्चन, अजहान में जो सवालात उठ रहे हैं, उनको भी हम एड्रेस करें, because everybody have different background and different kind of concerns regarding their application. So we can take that. Sure, Mr. Atif, we would be proceeding to the participants' questions, but after 2 to 3 more questions, just to clear up things more, if you allow. Okay. Sure. It's your So, platform. You can do whatsoever you want. much obliged, Mr. Atif. So, proceeding further, I want to add that Mr. Atif just mentioned his mooting experience. I want to mention that not only International Islamic University Islamabad is proud of Mr. Atif. Mr. Atif is a proud member of the mooting circle and mooting alumni, and we are proud of him. Once again, Mr. Atif, I would like to extend my gratitude for having you here. So, My moving pleasure. further, as we have covered all the major aspects of the SOP, now after writing an SOP, after crafting, after drafting an SOP, is there any way to proofread the SOP? And secondly, is it important to proofread the SOP? It's very good question actually. In my case, to be very honest with you guys, मैंने अपने कोई आखिरी 1-2 दिन रहते थे एसओपी क्राफ्ट की थी, बट इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी. एंड व्हाट आई बिलीव इज कि आप एसओपी प्रॉपरली पहले लिखते हैं और जितना भी उसको रिफाइन कर सकते हैं टिल लास्ट 2-3 days. तो आप अगेन, ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप पहले अप्लाई करेंगे तो मे बी यू गेट सिलेक्टेड, और आप बाद में करेंगे तो शायद वो देखें भी नहीं आपकी एप्लीकेशन. मैंने लास्ट 15 मिनट्स थे आई गेस जिसमें एप्लीकेशन सबमिट की थी एंड आई वाज सिलेक्टेड. सो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ केस. सो दिस इज मिसकंसेप्शन आई बिलीव. सो आप अपनी एसओपी को एंड तक इतना भी लेट ना करें, क्योंकि मेरे साथ भी इशू आया था कि वो फिर बाद में ट्रैफिक की वजह से थोड़ा इशू, आप ओपन ही नहीं हो रही होती वेबसाइट.
तो इतना भी लेट ना करें, 2-3 दिन पहले आप सबमिट करवा दें, बट टिल देन आप उसको जितना हो सकता है रिफाइन करें। चेक आप करवा सकते हैं, लोगों से रिव्यू ले सकते हैं, बट लिखनी है आपने। और जो रिव्यू भी करेगा, इफ इज द स्मार्ट पर्सन, अगर इफ इज ए सेंसिबल पर्सन, वो कभी भी आपके मेन जो थीम या जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट, जो बेसिक जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स, जहाँ से इन्फर की जा रही हैं चीजें, उनको कभी चेंज नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर। You don't need to present artificial self of yours. आपने you have to show authenticity and originality. So आपके फैक्ट्स को चेंज वो नहीं करेगा, वो ये बताएगा कि the way you are inferring, ये इस्तेदलाल में जो गलती आप करें माफिज है, इस्तेदलाल एक रिजल्ट आप उससे डिराइव करें, उस इस्तेदलाल की गलती को आइडेंटिफाई वो कर सकता है, बट बेसिस को वो नहीं करेगा। सो थीम आपका अपना होगा, but you need to refine it. I recommend that. I strongly recommend that. Thank you, Mr. Atif. So one last question before moving to the participants' questions. Are there any online platforms from where we can get any idea of the SOP? Yes, just type on Google SOPs for UGRAD. तो वो बहुत सी SOPs आ जाती हैं, but again I am a bit suspicious about that. बिकॉज मैंने भी अपने टाइम पे वो चेक की थी और उसमें अक्सर SOPs 250 वर्ड से भी ज्यादा थी। सो आई वाज लाइक रियली, ये तो नहीं हो सकती SOPs फॉर UGRAD। सो आप आइडिया लेने के लिए वो पढ़ी है, कोई 15-20 पढ़ी है, वो आप चेक कर सकते हैं, बट अगेन खुद लिखें की पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं, तो मैंने आपको बता दी हैं। टॉक विद अदर एलमनाइज टू, और वो क्या पॉइंट्स देते हैं आपको, write it in your own words, properly craft it, mention everything which I have told you। इस तरह लिखें कि वो ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती हो। तो इसमें अब वो अक्सर फुल ब्राइट की या किसी और स्कॉलरशिप की SOPs होती हैं, वो UGRAD के चक्कर में एस्पायरेंट्स पढ़े होते हैं। तो just be smart while using online tools, because again अब जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ SOP, it was more than 350 words, there were 20 SOPs in one document। अब वो how those can be SOP of UGRAD, because they were more than 250 words, right? So you can get some, but again you have to use your own rationale to comprehend. That's great, Mr. Atif. So we can say that using our own rationale is the key to selection. Is the best key, yes. Is the best. So as we have questions from the participants as well, so we will be moving towards the first question from the participants, and the first question is from Mr. Unibur Rahman. He says, how can one sound more realistic and authentic while writing the SOP? Oh, very, very good question. Again, it's a good question actually. The only way to be real, to sound realistic and authentic is to be authentic, to be original. That's the only way. That's what मैंने शुरू में कहा था कि I'll speak from heart, because that's what जो लोगों को फायदा देगी, rather than इस तरह की। That's why I don't prepare any presentation. Cake presentation, or that's more like a class. No, I want to connect with you guys. I want to listen your queries. I want to tell you what I feel about UGRAD realistically. So आप खुद realistic रहे SOP में, authentic रहे. That's how you will sound authentic. Because the people who were interviewed, do you think they are like kids? No, they are smart. In my case, there were 2 ladies from the United States, and they were in their mid-40s. So the person who is in his or her mid-40s, he or she is the experienced one, right? And you cannot, dodge them. So just be original. I mean, you can infer in a way that you can use the facts, but facts should be the original one. You don't need to create the facts. कोई अपने से किस्सा बना के फिर उससे चीजें इन्फर करके SOP में लिखना कि मैंने ये किया था। अब वो आपसे पूछ लें इंटरव्यू में कि जनाब आपने ये जो किया था, इसकी ये बड़ी माइनर सी कोई डिटेल पूछ लें,
So you will be like, अगर आप कोई story at that particular time बना भी दें, not everybody is smart enough though, आप वो जो एक दो सेकंड पॉज देंगे ना, they are very sound psychologically, तो they will identify कि यहाँ पे he is dodging us, right? So the only way is to be real and to be authentic, for sounding realistic and authentic in your statement of purpose. So we have another key for the selection. After the objectivity, we have the Yes. originality is the key for the Yeah. selection. Yeah. So Rightly pointed out. thank you, Mr. Atif. I thank you very much for your presence at today's webinar, and I would like to extend my gratitude to all the participants as well who had attended today's session. And I believe that today's session will be instrumental in the selection, in the application process. Stay tuned, all. We have much more coming. Stay tuned. We will be updating our social media time to time if we have anything to come. So stay tuned. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you for having me.